90% लोग ड्राइंग इसलिए ख़राब कर देते हैं क्योंकि उनकी आउटलाइन गलत होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रिड मेथड सिखाऊंगा जिससे आप 100% एक्यूरेट आउटलाइन बना पाओगे इवन इफ़ यू आर ए बिगनर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ विजय थलापति के इस इमेज को आप लोग ग्रिड मेथड की हेल्प से कैसे ड्रॉ कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब स्केल लेकर इमेज के ऊपर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो और ध्यान रखो कि सब लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो। ग्रिड मेथड में हम इमेज को छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। इससे ड्राइंग इजी हो जाती है क्योंकि हम एक टाइम में सिर्फ छोटा पार्ट ड्रॉ करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनो कि आपको पूरा फेस या ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सिर्फ एक बॉक्स के अंदर जो शेप है उसको देखना है। अब उतनी ही इक्वल डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो ताकि पूरी इमेज छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाए। अब हर बॉक्स कंप्लीट करते टाइम सिर्फ उस बॉक्स पर फोकस करो, साइड वाले बॉक्सेस को इग्नोर करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं आप लोगों को 2 टिप्स बोनस में देना चाहता हूँ। जल्दी करोगे तो गलती होगी, स्लो काम करोगे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, एक टाइम में एक बॉक्स ही आपको मास्टर बना सकता है। एंड आप लोग वीडियो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अब नेक्स्ट बॉक्स पर जाओ, वहाँ जो शेप दिखे उसको धीरे से ऑब्जर्व करके लाइट हैंड से ड्रॉ करो बिना प्रेशर डाले।
आपने ये मेथड समझ लिया तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को इजीली बना सकते हो, बस प्रैक्टिस करते रहो। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, डू इम्प्रूव योर ड्राइंग। बाय बाय।